This constitution gives you privilege to amend it. And so we did. 105 times in 75 years. Or rather 70 years, because it was from 50 onwards. 105 बार हम इस डॉक्यूमेंट को सुधार चुके हैं. 1740 Constitution of USA was drafted. Till date it is amended only 20 times. कौन सा बेहतर है? कोई बताएगा? कौन सा डॉक्यूमेंट बेहतर है, जो 250 साल में 20 बार अमेंड हुआ या जो 70 साल में 105 बार अमेंड हुआ? Which document do you consider is better? India's. Very good. What's your name? मेहता जी के लिए ताली बजाइए. कम से कम एक बच्चे को तो रियलाइज हो रहा है कि यार यही बेटर है. और मालूम है क्यों बेटर है? क्योंकि हमारे अपने शास्त्र भी कहते हैं परिवर्तन ही जीवन है. रिजिडिटी स्टेल्स, स्टिंक्स, डिकेज. जब भी कुछ रिजिड होता है ना, तो आपको अपने ग्रैंडफादर भी बर्दाश्त नहीं होते. पुरानी सोच है आपकी, पापा, बाबा, दादाजी, आज ऐसा नहीं होता, ये कहते हैं ना. ग्रैंडफादर की सोच भी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो कॉन्स्टिट्यूशन की कैसे होगी? इसलिए हम बदलते रहते हैं, चेंज करते हैं, मॉडर्न टाइम के हिसाब से इसका चलते हैं. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट. 26 नवंबर इसलिए भी जरूरी है आपको याद रखना, being students of law and tomorrow's practicing lawyers or judges or law officers in corporate houses, or maybe some of you represent India abroad, you must remember this day, because this was the beginning of the shaping of India. छब्बीस नवंबर 1949 को जिस दिन ये ड्राफ्ट फाइनली हुआ, तब भारत में एक भी राज्य नहीं था. सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और प्रिंसली स्टेट्स थे. और ब्रिटिश प्रोविंसेस वर नेम्ड एज पार्ट ए स्टेट, पार्ट बी स्टेट, like this, under Schedule 1 of the Constitution of India. It took further 6 years. 7th Amendment to the Constitution of India brought State Reorganization Act 1956, जहां पर हमने सारे प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज करके, सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस को मर्ज करके, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स क्रिएट किए. अच्छा, जब ये शुरू किया तो क्वेश्चन मार्क था कि अभी तो सबको एक साथ तो कर लिया, अब स्टेट बनाने हैं, तो बेसिस क्या हो? स्टेट्स की बाउंड्री बनाने का कोई बेसिस होना चाहिए. कौन से बेसिस पे बनाएं? तो बहुत मेटामॉर्फोसिस के बाद ये थॉट आया कि चलो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाते हैं. एंड दैट इज व्हाई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट carved out states into India on the linguistic basis. लेकिन परेशानी तब हुई जब पता चला, रे बाप रे, तो बहुत सारी लैंग्वेज हैं. भारत में लैंग्वेजेस की कमी नहीं है. अच्छा, कमाल की बात यह है की आमच्या महाराष्ट्रातून 4-5 तर मराठीच आहेत. कोकण चले जाओ तो अलग टाइप की मराठी, पुणे चले जाओ तो अलग टाइप की मराठी, नासिक चले जाओ, नागपुर, मतलब कैसे बनाते जाएंगे? कितने टुकड़े करेंगे? गुजरात जाओगे तो कच्छी गुजरात अलग है, सदर्न गुजरात अलग है,
यानी ऐसा भी नहीं है कि चलो सिलेक्ट कर लिए 8-10 लैंग्वेज छुट्टी पाई। नो नो नो, हिंदी बेल्ट में चले जाओगे तो अवधी है, भोजपुरी है, बुंदेलखंडी, बघेल, मतलब आप गिनते जाओ, खत्म ही नहीं हो रही। तो परेशानी शुरुआत थी ये लिंग्विस्टिक एक्ट्स जब के आधार पर स्टेट बनाए गए। तो फाइनली 1956 में 12-13 स्टेट्स बना के छुट्टी की। पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वहां रुका? आज कितने स्टेट्स हैं? 29 स्टेट्स। आज कितनी यूनियन टेरिटरी? 8 यूनियन टेरिटरीज। हम बदलते रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इन मेकिंग, स्टिल कॉन्स्टिट्यूटिंग। वी हैव नेवर सेट ऑन आवर लॉरल्स दैट ये बन गया, हो गया, छुट्टी, थैंक यू, ऐसा नहीं है। आपने कभी यूएस का मैप उठाकर देखा है? मुझे तो ऐसे लगता है जब उनके सामने ये प्रॉब्लम आई होगी तो उन्होंने एक स्केल उठाई, हो गए स्टेट्स। ना कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम, ना कोई कास्ट की प्रॉब्लम, ना क्रीड की प्रॉब्लम, ना दिस क्लास दैट, कुछ नहीं, स्केल उठाओ, खींच दो, ऐसे स्टेट्स हैं। हमारे तो लैंग्वेजेस के अंदर लैंग्वेजेस हैं, सब लैंग्वेजेस हैं, बोलियां हैं, और हमारा इंडिपेंडेंस स्ट्रीक इतना स्ट्रांग हो गया है 70 सालों में कि 1000 साल तो हम चुपचाप गुलामी झेलते गए। जब स्वतंत्र हुए तो अब बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हम। जैसे कोई बछड़े को रस्सी खोल दो तो ज्यादा कूदता है, वो पूरी रात बंधा है तो शांति से चारा खाएगा, खोल दो तो कूदेगा। 1000-1500 साल we had been under subjugation, but now then the moment we got freedom we want, every pocket needs statehood, हमारा स्टेट अलग बना दो, हमको अलग चाहिए, हमको, मतलब हम, I am afraid the day will come we may have 565 states. जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो ये स्टेट्स हो जाएंगे, because we keep on dividing, we keep on multiplying. 1960, after State Reorganization Act was promulgated, 4 years later, Bombay was divided into Maharashtra and Gujarat. And do you know, prior to that, prior to independence, the territory of Bombay went up to Karachi. Karachi was part of Bombay Presidency. If you were a student of law in some college in Karachi, you would get a degree of law from Bombay University. The reach. So Bombay was cut first by partition. Then in 1960, the areas were divided into Maharashtra and Gujarat. Two fresh states were carved out, not in 1956 but 1960. 63, Punjab was cut into further portions. 47, Punjab was cut by partition. Half the Punjab went to Pakistan. The balanced Punjab, which remained in India, was further cut in 1963. Haryana was created. Why? Because states were shaped on the basis of language, and the southern Punjab was predominantly Hindi speaking. So Hindi speaking belt was created as Haryana. By the year 1971, one more cut was done in Punjab and Himachal was created. The mountaineering part of Punjab
was found difficult to be administered from the center. So they created another state, and 1971 Himachal came into shape. India is getting constituted, isn't it? But if you think that 1971 was that's all, no. Wake up. By the year 1972, northeastern part, which was predominantly Ahom dynasty's Assam, 3 more states were created: Manipur, Meghalaya and Tripura. States are increased. Manipur, Meghalaya, Tripura came into being in 1972. By the year 1975, Sikkim was a kingdom, not part of India, independent kingdom. They wanted to merge themselves with India. 1975, India welcomed it, took it into wings. Sikkim became another state of India. Kingdom was dissolved, became part of the territory of India in 1975. By the year 1987, 3 more states came into being: Arunachal Pradesh, Mizoram and Goa. Northeastern part of India, Arunachal Pradesh and Mizoram were carved out. And Goa, till then being union territory, was carved out, given statehood, and was cut off. Goan union territory had 3 pockets in India: Goa, Daman, Div. So Daman, Div was cut off. Daman, Div remained union territory, Goa became state. In 2000, 3 more states came into being. Madhya Pradesh was cut, one portion was made Chhattisgarh. Bihar was cut, Jharkhand was shaped up. Uttar Pradesh was cut, Uttarakhand, Uttaranchal was made. States are increasing. India getting constituted. Constitution is going on. In 2014, Andhra Pradesh was cut, Telangana was created. 2019, Jammu and Kashmir divided into 2 parts. J&K became one union territory, Ladakh became another union territory. And recently, 2020, 2 different union territories being beside each other were merged into one. Daman Div and Dadra Nagar Haveli were 2 different union territories. They were merged in 2020. Now it became one union territory. So by the time you remember how many states are there in India, how many, that changed. तो जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा उस पर बैठे मत रहना. सेकेंड ईयर आते आते स्टेट बदल जाएगी, यूनियन टेरिटरी बदल जाएगी. अब सोचो जब हमने एलएलबी किया था और आज में कितना फर्क है. अगर अपडेट नहीं करते तो हम भी पुराना बताते. So the Guru Mantra to you all as future lawyers is that keep updating yourself when you're a student of law. You cannot sit on your laurels. And if you have no interest in studying, drop yourself from the field of law. Because each day Supreme Court brings new concept, new principle, new doctrine. You have to be updated on your heels. Each session of Parliament is introduced with new bills. They become statutes. By the time you keep a track on the national statutes, your state assembly changes something. So you have to keep a track on the legislative assembly, bringing bills. By the time you finish up legislative assembly, your municipality changes because they have their own setup of making rules.